हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा अजहर ऑफिशियल। आईएमएफ के साथ हमारी डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। 10 डेज फेस टू फेस मीटिंग्स हुई, नेगोशिएशंस हुई आईएमएफ के डेलीगेशन के साथ, लेकिन इनकन्क्लूसिव ही ख़त्म हो गई। इसकी वजह क्या है? आईएमएफ हमसे क्या मांग रहा है और हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना ही क्यों पड़ता है? डिफ़ॉल्ट क्या है? क्या हम वाकई डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं और क्या यहाँ से वापसी मुमकिन है? ये बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं और इसके लिए किसी एक्सपर्ट से बात करनी ज़रूरी है। मैंने एक वीलॉग रिकॉर्ड किया था जावेद हसन साहब के साथ, जिसमें बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किए थे, समझने के लिए, एजुकेट करने के लिए लोगों को कि इकोनॉमी में मसाइल क्या हैं। तो इस सारे मामले में भी मैं समझती हूँ कि जावेद साहब से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मुझे आप लोगों की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि उनके साथ एक और सेशन रखा जाए। तो ये जो करंट सिनारियो है, इसको जावेद साहब के साथ ही डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर पाकिस्तान। जावेद साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। एक तो इट वाज वेरी एजुकेटिव टॉकिंग टू यू लास्ट टाइम, बिकॉज इकोनॉमिक्स हर एक का फोर्टे नहीं होता और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए टू हैव अनदर सेशन विद यू। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। It's a pleasure. Thank you for having me. माय प्लेजर। हमने बात की थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के की इश्यूज क्या हैं, सब्सिडीज पे बात की थी हमने, फिस्कल डेफिसिट पे बात की थी। अभी स्ट्रेट आ जाते हैं आईएमएफ पे, बिकॉज एक तो हमने डिले किया है, 5 मंथ्स डिले ऑलरेडी हो गया है और जो टॉक्स हो रहे हैं आप देख रहे हैं इतनी जल्दी एग्री नहीं कर रहे हैं वो लोग। अभी फिर से डेलीगेशन वापस चला गया है। Mm. ये बताइए कि ऐसा आईएमएफ हमसे क्या मांग रही है जो हम उन्हें दे नहीं सक रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस? और दूसरा ये बताइए कि हमने इतना डिले क्यों किया उनके पास जाने में, अगर इतना जरूरी था आईएमएफ के पास जाना? अच्छा, काफी सारी चीज इसको अनपैक करना जरूरी होगा बिकॉज इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेनी कंपोनेंट्स इसमें जो है। सबसे पहले तो ये था कि डार साहब जब आए सितंबर अक्टूबर में, ही डिसाइडेड कि रुपया को 200 से नीचे ले जाएंगे अगेंस्ट द डॉलर। नाउ दैट वेंट कंप्लीटली अगेंस्ट जो बेसिक मुआहदा है ईएफएफ, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का आईएमएफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है इट विल बी मार्केट बेस्ड। वो जो मार्केट जो डिटरमिन करेगी ऑन अ डेली बेसिस, आप वो उस बेसिस पर जाएंगे। अब फॉर सम रीजन और द अदर दास साहब के दिमाग में आ गया है कि स्ट्रॉन्ग करेंसी इज व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, व्हिच इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो ही डिसाइडेड कि 200 से नीचे ले जाएंगे, व्हिच वाज इम्पॉसिबल रियलिस्टिकली गिवन आवर इन्फ्लेशन लेवल, गिवन आवर ट्रेड डेफिसिट, गिवन हम लोग बोरोइंग करते हैं, वो नहीं हो सकता था। एंड रादर देन जो हमारी जो प्रैक्टिस सिंस पीटीआई गवर्नमेंट थी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट हो एंड अलाउइंग द मार्केट टू डिटरमिन, ही ट्राई टू फिक्स इट। 200 से नीचे तो कभी गई नहीं, मगर इट वाज फिक्स्ड अराउंड द 220 230 लेवल। एंड उसके वजह से काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस इकोनॉमी में शायद होने लगी। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स इन द इकोनॉमी। बेसिकली ये हुआ कि जो लोग रेमिटेंसेस थे वो कम होने लगे। उसके साथ ये भी हुआ कि जो एक्सपोर्ट है वो एसेंशियली विथहोल्ड करने लगे अपने एक्सपोर्ट प्रीसीड्स को। ऊपर से ये है कि आपकी जो मार्केट रेट है, एक्चुअल मार्केट रेट जो इफेक्टिवली कहते हैं ब्लैक, मगर जहां ट्रेडिंग हो रही थी, दैट शॉट अप। यू नो, आपकी इंटरबैंक रेट अगर 225 230 थी, मार्केट में 260 265 पे चल रहा था। एंड दैट केप्ट वाइडनिंग, इट वेंट अप टू 280 285, and because of that it became even more difficult to get dollars. People refused to remit money from abroad. They would rather do it through the informal channels or simply hold back because they knew effectively dollar जो है वो rupee जो है devalue करेगा। And that was one of the reasons why IMF की आपकी एक बेसिक कंडीशनैलिटी है, दे सेड कि आप सबसे पहले तो ये सबसे ठीक करें। दूसरी चीज है कि हमने
प्रॉमिस करा था, टारगेट था कि हमारी जो बजट सब बैलेंस है, प्राइमरी दो पार्ट होते हैं बजट के, और उसमें जो बैलेंस होता है दो पार्ट का होता है। एक होता है बिफोर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स के, विदाउट द इंटरेस्ट पेमेंट्स, बिफोर टेकिंग अकाउंट इनटू इंटरेस्ट पेमेंट्स, उसको कहते हैं प्राइमरी फिस्कल बैलेंस। फिस्कल मींस जो बेसिकली बजट है। और दूसरा होता है ओवरऑल फिस्कल बैलेंस, जिसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूड कर देते हैं। तो हाँ, we had agreed with IMF in the September, the July negotiation, 7th and 8th review जो हुआ था, we had agreed कि हम लोग की प्राइमरी फिस्कल बैलेंस सरप्लस होगी 0.2% हम्म, of GDP. That तब would be क्या थे? about, तब probably मिफ्ता इस्माइल थे। Mifta Ismail had agreed on that, and that would be about 150 billion rupees of surplus. Now, जब ये लोग नंबर्स देखने लगे, that was simply not the case. तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, एंड एक्चुअली हम लोग का सरप्लस है। फिर बाद में कहा कि नहीं, हम लोग का जो थोड़ा सा बहुत डेफिसिट आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लड रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो उन्होंने बोला ठीक है, फ्लड रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखाएं कितना है, तो वो निकला कोई 350 बिलियन। तो चले उसको भी अगर इंक्लूड कर देते तो there was no way that you would have had the fiscal deficit, primary fiscal deficit, जो कोई 1% के करीब आ रहा है। Okay. And this was really the reason. तो IMF ने ये negotiation चलता रहा है, and जो projected fiscal deficit, primary fiscal deficit is about 1%. So IMF is completely unwilling to accept that. Okay. And that's all very much on the conservative side. और they expect कि आप जो है basically taxes बढ़ाए, आप जो है जो one of the reasons why the primary fiscal deficit was increasing, because आप such subsidies provide कर रहे हैं to various industries, to various sectors, and those subsidies have to be removed. Price support mechanisms have to be removed. तो यही रीजन है, ये पिछले 3 महीने से यही डिस्कशन चलती रही। We were hoping somehow or the other that we'd be able to go to our friendly countries and not make these corrections and still be able to carry on. Instead of that, what happened कि इस 3 महीने में हमारी जो reserves हैं, they came down from about 8.5 billion जो reserves हैं to now less than 3 billion, 2.9 billion dollars. Yeah, So absolutely. that's really explains it. ये बताइए कि ठीक है, हमने लास्ट टाइम बात की थी, इट्स बीन 30 इयर्स कि हम IMF के साथ एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में है। हमें क्यों जाना पड़ता है बार बार IMF के पास? क्या एक दफा भी हमने कोई ऐसा मॉडल अडॉप्ट नहीं किया? बिकॉज बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को ठीक किया है IMF के साथ रहते हुए। हमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाई डू वी कीप गोइंग टू IMF? If you see, there are several countries, as you rightly point out, काफी सारे मुल्क हैं जो IMF के पास गए। I mean, one of the biggest is, if you think about it, Great Britain. In the 1970s, it had to go to IMF and had to take a program which was very tough. They implemented it once. They implemented it. They did not go back again. Our neighbor, India, in 1991, had to go to IMF. Having gone to IMF, they even had to pledge their gold. They literally had to transfer their gold reserves to some international destination, and then went through an IMF program with Manmohan Singh and Narasimha Rao. But they never, once they did, they implemented the IMF program and they never went back. Uske saath aap dekhe, East Asian countries, Thailand, Indonesia, South Korea, all of them have had to go through IMF programs. That was in 97, 98, unko jab Asian crisis hua tha. Magar they implemented far more tough programs हम लोग से। मगर एक दफा उन्हें implement करा, कोरिया में I personally was there, they never thought of it as
IMF programs. They owned it. They did the reforms, and then they never looked back. They made the structural changes, जो requirements थी, taxation की, removal of subsidies, removal of tariff barriers, making the companies more competitive. Restructuring. Overall structure, एक पूरा, if you want to think about it, and don't mean in any way to allude to people's personal health, but if you're not in a very healthy shape and your doctor says get it fit, otherwise you will die, these countries actually did what was necessary. They got fit, they went on the treadmill, they did whatever was necessary, and they actually got themselves in shape, and ever since they've not had to go back to the doctor. We are quite the opposite. हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अभी बचा दें. The doctor comes and gives us a series of prescriptions, and we reluctantly take that prescription. The prescription we take is only that which is medicinal, as in the aid that we get, or the loan package, but we don't take that internal reform which any good patient should do. Now, we have gone to IMF again and again. IMF has very clearly said that we need to increase our tax to GDP ratio. We need to change our tax structure. We have tax to GDP ratio हमारी जो है वो कोई 10% है. अब मैंने पहले भी शायद आपको कहा था कि ये हम अगर देखें इंडिया में it's close to 20%. Most other countries, OECD countries जो है वहाँ कोई 35-34% है. Even in a country like Turkey, it's close to about 27-28%. हम में क्या खास बात है कि हम 10%, जब 10% टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है, और उसमें भी जो है about 5.5% फॉरेन प्रोविंसेस को चला जाता है, तो आपके पास 4.5% रह जाता है. शॉर्टली सिर्फ समझा दीजिए कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता क्या है. अच्छा, टैक्स जो है, जो आप सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं टैक्सेशन से. टैक्सेशन डिफरेंट तरीके से होता है. आपके पर्सनल इनकम टैक्स पर होता है, आपकी कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स होता है, फिर ये जीएसटी होता है जो सेल्स टैक्स होता है, जनरल सेल्स टैक्स, फिर इंपोर्ट ड्यूटीज जो है उस पर टैक्सेशन होता है, और उस पर एफईडी होता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी. ये सारी एक कलेक्टिवली आपकी टैक्स बेस होती है. तो पर्सनल इनकम टैक्स को हम लोग सारों को पता है, कॉर्पोरेट टैक्स का भी जरा सब, इंपोर्ट ड्यूटीज का भी आप देखते हैं कि गाड़ियों पर, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर, हर चीज पर इंपोर्ट. पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 50% जो टैक्स रेवेन्यू है वो आती है आपके इंपोर्ट ड्यूटी से. बाकी आती है इससे जनरल सेल्स टैक्स से कोई अनदर 25-30%. जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है वो काफी कम है बनिस्बत दूसरे मुल्क के. वन ऑफ द थिंग्स इज कि पाकिस्तान में जो है, एंड वो जो टैक्स रेवेन्यू है, आप समझिए अगर आपका जीडीपी जो है वो 330 बिलियन है पूरे मुल्क में, दैट्स हमारा जीडीपी इज ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपका टैक्स रेवेन्यू कोई 33 बिलियन का है. तो इसीलिए आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो समझिए कोई 10% का है. मगर इसमें यह है कि हम लोग इंपोर्ट से टैक्स ड्यूटीज ले रहे हैं, हम लोग पर्सनल इनकम टैक्स ले रहे हैं, मगर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं जो पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट is about 1 million people in a country of 220 million. Exactly. Now, large part of the country is not paying taxes. Large segments of businesses, of जहां आपका जीडीपी है, जैसे मैंने कहा 330 बिलियन का जीडीपी है, उसमें लार्ज सेगमेंट्स जो हैं वो टैक्स नहीं पे कर रहे. आपकी एग्रीकल्चर नहीं पे करती है टैक्स, आपकी जो इंटायर रिटेल सेक्टर है वो नहीं पे टैक्स करती है. आप समझे
बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हमारी ब्लैकमेल हो जाती हैं, और आईएमएफ की रिक्वायरमेंट ही बेसिक ये है कि अपनी टैक्स बेस को आप ठीक करें। तो यही जी, कुछ चीज है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हुकूमत से ही उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही, और फिर भी कीप गोइंग बैक टू आईएमएफ। इज दिस वन ऑफ द रीजंस? दैट इज द वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। ओके। हम लोग टैक्स नहीं कलेक्ट करते हैं, टैक्स जब टैक्स नहीं कलेक्ट करते हैं तो हमारी जो फिस्कल स्पेंडिंग है, जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट करती है वर्सेस जो रेवेन्यू है, उसमें डेफिसिट आता है। डेफिसिट आता है तो हम लोग कहाँ से लो लाए? तो डोमेस्टिकली तो बस कुछ बोरो कर सकते हैं हम लोग, फिर इंटरनेशनली बोरो करते हैं। इंटरनेशनली जब बोरो करते हैं तो हमारा एक्सटर्नल क्रेडिट बढ़ जाता है। और अब जो है प्रॉब्लम ये है कि अब एक्सटर्नल क्रेडिट इतना बढ़ गया है तो उसको वापस करने में और बोरो करना पड़ रहा है। सो वी हैव गॉट आवरसेल्फ, जो एक और फिनोमेनन होता है जो डेट ट्रैप, कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज वी आर नाउ हैविंग टू बोरो जस्ट टू रिपे अर्लियर बोरोइंग. So we really cannot continue until we improve our revenue ways collection. ways हाँ, of doing the economy, actually. हाँ, Let's put it we this way. need to improve our revenue collection. अगर revenue नहीं collection, और ये we have to stop borrowing. इसीलिए जो IMF ने मैंने जब शुरू करा कि आपको प्राइमरी डेफिसिट जरूरी है, अगर प्राइमरी सरप्लस करना जरूरी है, जो बेसिक आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वर्सेस ऑपरेटिंग रेवेन्यू, वो बैलेंस होना चाहिए ना, बल्कि सरप्लस आप पहले का पे कर रहे हैं तो आपको सरप्लस जनरेट करना Why चाहिए। do we fail to do that? क्यों नहीं हो रहा ये हमसे? काफी रीजंस है, जैसे मैंने कहा, फॉर स्टार्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारी बहुत कम है। टैक्सेशन पर की ही एग्जांपल अगर ले लें तो हम टैक्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, सैलरीड क्लास से तो कट जाता है, वी ऑल नो दैट। बाकी इतने लूप होल्स हैं, वी ऑल नो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट्स किस तरीके से यहाँ टैक्स से बचते हैं, और गवर्नमेंट को पता होता है जो लेने की कोशिश करता है वो बड़ी पॉलिटिकल प्राइस पे करता है, तो somebody would have to stand up to it. देखें, इसमें जो कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ क्रिटिकल थिंग, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। वी नीड अ गवर्नमेंट जिसकी मैंडेट हो, जो सख्ती से करे। सारे दुनिया में कहते हैं कि देयर आर टू थिंग्स यू कांट अवॉइड, व्हिच इज टैक्स एंड डेथ। सो अनफॉर्चुनेटली टैक्स इज समथिंग व्हिच एवरीवन शुड बी पेइंग, बट इन पाकिस्तान द ओनली पीपल जो पे करते हैं वही जो बेचारे नेट में आ गए, ना इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। There are large segments of society that refuse to pay tax, and that has been going on and on and on forever. Now, you can't keep loading on वही लोगों को टैक्स, जिसलिए कि एक लिमिट होती है, और वो नहीं कर सकते तो आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जैसे अब जो है IMF के साथ मुआहदा है, विल प्रोबब्ली इंक्रीज GST फ्रॉम 17% to 18%। तो अगेन वो जो लोग कंज्यूमर्स हैं वो पे करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्टली टैक्सेशन का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा रहे हैं, Gas. gas bills बढ़ा। So we are not again going back to doing what is fundamentally required. Now we always in a situation कि हम लोग IMF के पास जाते हैं, बोलते हैं अगर अभी नहीं दोगे तो हम लोग bankrupt हो जाएंगे। So IMF has been saying one of the things which is the entire tax regime, उसको change करें, उसको improve करें, उसमें सारे जो आपके segments of society उसको include करें। एक concept होता है टैक्सेशन में इक्विटी का, कि हर पार्टिसिपेंट, हर जो सिटीजन है should be an equal participant in that tax, other than those who are earning very little. But generally speaking, there should be some fairness in this process. मगर पाकिस्तान में कोई fairness नहीं है. It's only a few people or indirect taxation that takes place. And indirect taxation is probably the worst because it affects the poorest most. तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। हम लोग बार बार जाते रहेंगे IMF के पास जब तक हमारी टैक्स रिजीम इंप्रूव नहीं होती, जब तक हम लोग टैक्स टू GDP रेशियो कोई 15-16% नहीं करेंगे, आइडियली तो उससे ज्यादा होना चाहिए, वी विल कंटिन्यू टू बी जनरेटिंग प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट्स एंड इवन लार्जर ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट्स, जिसके वजह से हम लोग को बोरो करना पड़ेगा।
डोमेस्टिक बैंक से और इंटरनेशनल बैंक से। द प्रॉब्लम दैट वी हैव नाउ, द इंटरनेशनल मार्केट, credit market has closed itself to you, so we are really in a jam. ये तकरीबन $6.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज था जो 2019 में साइन हुआ था, और अभी जो ट्रांच मिलनी है वो $1.1 मिलियन से की है। इससे क्या हो जाएगा? What difference would this make? देखिए, we are now in a very, as they say, dire situation. हम लोग बहुत बुरी हालत में। ये 1.1 बिलियन का ये फायदा है कि इससे दूसरे जो मल्टीलैटरल्स है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, एआईबी है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, ये सारे भी खुल जाएंगे, तो हो जाएगा। इसकी ये भी कोई 4-5 बिलियन ले आएगा। मोर ओवर आपके अब फ्रेंडली कंट्रीज ने कहा है, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, पॉसिबली चाइना इवन, कि हम लोग जो है पैसे नहीं देंगे अंटिल यू आर बैक इन आईएमएफ प्रोग्राम। तो उससे उम्मीद है, आईएमएफ तो डिमांड कर रहा है कि उनसे जो है आप एटलीस्ट 7 बिलियन रेज करें, $7 billion फॉर दिस नेक्स्ट ट्रांच टू बी रिलीज। इनफैक्ट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ये नेक्स्ट ट्रांच नहीं रिलीज होगा अगर वो 7 बिलियन नहीं मिलता है। सो वी नीड टू रेज 7 बिलियन फ्रॉम टफ टाइम्स अहेड फॉर डार साहब, ये वाली रिलीज हो जाए तब भी वेरी टफ टाइम्स, बिकॉज जैसे ही ये रिलीज होगा तो हमारी रिजर्व्स जरूर बढ़ जाएंगे, probably go up to 10, but we are running all the time current account deficits, जो हमारे जैसे पहले भी कहा था कि हमारी ट्रेड जो है वो नेगेटिव में होती है हमेशा, इंपोर्ट्स जो है मच हायर देन द एक्सपोर्ट्स, हमारी रिमिटेंस मिला के जो है वो एक ट्रेड डेफिसिट होती है। अभी तो कम हो गई है, कोई $500 million मंथ है, मगर इट इज अप टू $1 billion। तो वो अगर आप देखें तो whatever we will get in 10 billion will soon start getting depleted. Moreover, every year we are having to pay back principals and principal repayments of जो पहले loans है, अब total loans हमारे कोई 130 billion है, on a yearly basis हम लोग को repay करना पड़ रहा है कोई 22 to 23 billion of principal plus interest। ऊपर से अगर आप इमेजिन करें हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, दैट इज द ट्रेड डेफिसिट माइनस रेमिटेंसेस, वो कोई अभी जो है कोई $500 million पर मंथ है, मगर वो सप्रेस्ड इंपोर्ट्स है, मगर ऑन नॉर्मल बेसिस कोई $1 billion है। तो लेट्स से $1 billion a month, so $10 billion at least a year, so we need repayments, external outflow of about 33-34 billion every year for the next 3 years. That is about 100 billion. इतनी इतनी horrific picture के साथ, isn't this the right time to crack on the elite capture that we talked about last time? Yes, very much so. I mean, look, ये जो हमारे यहाँ चलता रहा है काफी हद तक के एवरीथिंग इज केटर्ड फॉर एक एक्सट्रैक्टिव क्लास जो सारी चीज अपने बेनिफिट के लिए लेती है, एंड इनफैक्ट देन डजंट गिव बैक एनीथिंग। देयर नीड्स टू बी ए क्रैकडाउन, बट आई थिंक एंड दैट विल कम अबाउट। एक और कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, व्हिच इज वी प्रोबब्ली विल हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, एंड डेट रीस्ट्रक्चरिंग इसलिए कि ये जो हमारी जो जितना बर्डन है, डेट बर्डन जो बोरोइंग की है, और हर साल अगर अगले 3-4 साल हम लोग को 33 बिलियन वापस करना पड़े, वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। और मोर ओवर हर साल हम लोग कुछ जो है रोल ओवर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अभी इस साल अगर 33 बिलियन टोटल एक्सटर्नल आउटफ्लो है, नेक्स्ट ईयर शायद 40 बिलियन हो जाए, उसके बाद so we'll find ourselves even in greater problems। इसका एक और प्रॉब्लम है, ये जब आपके जो बाहर मुल्क वाले ना, बाहर इन्वेस्टर्स जो है, ये जब आपके देखते हैं कि ये पहाड़ है आपके रीपेमेंट्स का, और किसी वक्त भी आप ये रीपेमेंट्स नहीं कर सकते हैं और डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो वो बोलते हैं ये तो बड़ा अनस्टेबल सिचुएशन है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपके मुल्क में। और तो आप क्या जो एक चीज कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो वर्चुअली रुक जाती।
मोर एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिविडेंड, बिकॉज हम हमारे डॉलर शॉर्ट है, तो उनकी डिविडेंड्स नहीं हम लोग पे कर रहे हैं टू रिपैट्रिएट बैक टू देयर होम कंट्रीज और होम कंपनीज। सो नाउ वो कह रहे हैं ये तो यहाँ इन्वेस्ट करना फायदा ही नहीं है, इसलिए कि हम लोग डिविडेंड्स वापस। सो वी आर क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो all of this will suggest two things, which you first, that we need to address the issue of huge advantages to certain segments of society that will need to be addressed. Then also we'll need to address the overall debt structure, कि कैसे ये sustainable हो. Or even in addressing the debt structure, there will need to be taking account of much greater taxation of all segments of society equally. There has to be some fairness in that. Moreover, some of the lenders in Pakistan, अगर वो debt restructuring बाहर वालों के लिए करते हैं, तो वो तो चाहेंगे, वो डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान में भी debt restructuring हो. तो कुछ बैंक्स यहाँ हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो लेंडर्स हैं, उनको उनकी भी हेयर कट्स होगी इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल उनसे बोरोइंग है उसको कम करा जाए, और फिर मोर ये भी कर जो शेड्यूल है रीपेमेंट उसको एक्सटेंड करा जाए. तो इट्स मगर ये सारा कुछ होगा, वो डिमांड करेंगे कि ये जो आपका सिस्टम चलता रहा है वो नहीं, कैन नॉट कैरी ऑन. बट ये बताइए कि क्या हमारे सिस्टम में कोई विलिंगनेस नजर आ रही है आपको? मतलब दे सर्टेनली अंडरस्टैंड कि ये क्या है सारा मेस, बट कोई विलिंगनेस आपको नजर आ रही है कि चीजें ठीक करनी है फॉर गुड? आई थिंक देखिए, एटलीस्ट पीटीआई में डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में एक्सेप्टेंस है. Okay. And there is generally, अब शौकत तरीन ने भी मेंशन करा है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा. आई थिंक अगर आप असद उमर से भी बात करें तो वो भी कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा. अभी तक जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज वो इतने खुल के डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, मगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही होगा कि एक होल स्टेल पूरी रिफॉर्म इकोनॉमी की होनी पड़ेगी. एक ग्रैंड डेवलपमेंटल बार्गेन, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर जुबैर, वो कहते हैं दैट वी विल हैव टू एम्बार्क अपॉन, और उसमें जो है आपकी अशरफिया क्लास जो एलीट है उसको पे सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द वंस हु कैन गिव मोस्ट. अब आप और कितना गरीब लोगों को टैक्स करेगा और इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाएगा? इफ एनीथिंग हम लोग को इम्पोर्ट ड्यूटीज कम करने हैं, बिकॉज एक और चीज है कि हमारे यहाँ कंपिटिटिवनेस नहीं है, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज है. तो ये जो एलीट कैप्चर है has now come to a point where it cannot sustain itself. वो चल नहीं सकती अब. और कोई खुशी से नहीं करेंगे, कोई अपने वॉलंटियरली नहीं कर रहे, और जनरली कहीं नहीं करते हैं. बट ये होता है वैसे, आई हैव टू से इन सारे दूसरे दुनिया में भी elite is elite and they try not to give anything until forced to. There is a levels, मतलब फिर भी कोई एक लेवल होता है जिसपे आके वो कुछ ना कुछ इक्विटेबल बेसिस पे चीजें शेयर करते हैं अपनी स्टेट में. हमारे तो कोई हाल ही नहीं है. आई डोंट सी दैट हैपनिंग टू बी ऑनेस्ट. और जो लोग अपने बिजनेसेस शिफ्ट कर रहे हैं वो ये सोच के शिफ्ट कर रहे हैं कि हम तो दे रहे थे पहले भी, ये वो बिजनेसेस हैं जो पहले भी अपना शेयर दे रहे थे. सो वो जो गैप है बिटवीन द पीपल जो बिल्कुल नहीं देना चाहते और वो पर्क्स भी एंजॉय कर रहे हैं, एंड देन देयर आर पीपल जो दे रहे हैं और उनको रिटर्न में कुछ नजर नहीं आ रहा. ये ट्रस्ट अर्न करना भी बहुत चैलेंजिंग है. You are absolutely right. देखिए, this is a low trust society. People have lost trust in the system, lost trust in the institutions. And one of the critical thing about trust is कि equity होनी चाहिए, equitable होना चाहिए, कि the how one person is treated. If you are treated in a favorable manner and I'm treated in an unfavorable manner, I will lose confidence in the system. I'll not have trust. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में some people are treated in a manner. If you are a taxpayer and you declare your taxes, तो आपके नोटिस पर नोटिस आते जाते हैं. I personally am facing that. जो बंदा नहीं टैक्स पे करता है और टैक्स पेयर उसकी is in the best position. So it almost disadvantages, to be honest. So that will have to change. And as I said, it's not only a question of making sure that those people who are individuals,
but whole segments of society. I don't understand why the trading sector is not taxed. Everywhere else in the world, the Absolutely. traders are not treated as some holy cow who are beyond taxation. They pay taxes just like the rest. Right. आप अगर लंदन में तो आप you have lived, वो तो कॉर्नर शॉप भी वो हर चीज का रिसीट रखता है, वो Exactly. टैक्स पे करता है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका भी होता है. He makes sure के at the end of the year he puts all the bills together आपके बैंक and से pays. पैसे निकाल लेते हैं वो तो हाँ, आपसे हाँ, पूछते भी नहीं है. अच्छा, मुझे we- ये बता दीजिए जावेद साहब, हमने इतना जिक्र सुना है इस खौफनाक लफ्ज का, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट. खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होता है तो व्हाट हैपेंस इन अ कंट्री? देखिए, I think I have to say there's an economist Ahmed Pirzada and we've been discussing this quite a lot. Default is a very painful situation. आपकी जो basically external borrowing है वो रुक जाती है, आपकी LCs रुक जाती है, आपकी सप्लाई काफी चीज की रुक जाती है, आपकी इकोनॉमी में contraction हो जाता है. But having said that, all of that, Zunaira, we are already kind of there. या अगर बिकॉज आप एलसीज तो रुकी हुई है, सप्लाई तो रुकी हुई है. एलसीज भी रुकी हुई हैं, सप्लाईज और हमारी इंपोर्ट्स एनीवे कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं पीक से. अगर आप देखें श्रीलंका का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मोस्ट रिसेंटली डिफॉल्ट होने का. उनकी जो एट फ्रॉम पीक जो कॉन्ट्रैक्शन थी इंपोर्ट्स की वो कोई 40% थी. अब जो है नॉर्मलाइज जरा सा वो इट्स अबाउट 20%. सो दे आर बैक टू अबाउट 80% ऑफ देयर पीक imports. So, ओके. it doesn't mean that we will stop existing. ओके. I think I think there's a over exaggeration of how bad things will become. It is no way something we should look forward to, but I think there is something we should prepare ourselves that it is very much a possibility. And frankly speaking, given the way the economy is currently going, where we can't sustain the debt level of debt, it would be better to think in terms of defaulting and restructuring that debt. And so that it is at a much more manageable level, so that we can actually see some growth. अभी तो कोई growth नहीं हो रही because हमारा सारा effort, सारा जो is to repay whatever we have. And if you think about it, companies भी ऐसी होती है, अगर गलत borrowing करी है, and it is not because of the poor people, it is because of certain elite. सादा फायदा जो हुआ है borrowing का, ये तो elite को हुआ है by and large. उन लोग ने projects ऐसे लगाए हैं जो sustainable नहीं है, जिसने dollar returns नहीं generate करे. So I think they will probably have to suffer a bit more. The poor people are suffering anyway. But if we actually do restructuring, which is after default, then we will actually give the poor people some hope of growth, because we do need growth in this economy. We do need to create sustainable jobs. Very briefly, Javed Saab, where do you see Pakistan at 100? I remain optimistic. I always believe that we are probably seeing the worst of times right now. Two things. एक चीज मैं कहूँगा, there will be no economic resolution until there's political resolution. Okay. We live in a country which is 220 million. It cannot become a North Korea. North Korea, वहाँ dictatorship, again, it's not a great economy, whatever people may say. Yeah. We will have to have democracy. And once you have a democracy where there is popular mandate, they can have the ability to do things जो necessary, and whoever has a popular mandate will be able to will have the political capital to do tough things to restructure the economy. Once that restructuring happens, believe it or not, it takes very little time before you start resurging again. बहुत जल्दी फिर आपकी growth path पर आ जाते हैं. But you need to have certain degree of consensus. You need to have certain degree of political goodwill. And if other people say कि आपके पास एक stable government है, वो stability अगर हो, तो दूसरे भी आने लगते हैं invest करने में. और जब वो investment शुरू हो जाती है, जब एक positive cycle हो जाता है,
So it turns around very quickly. So while it is all very gloomy right now, and I, this year I think कोई 8 लाख लोग पाकिस्तान से immigrate करें. This is one of the highest ever, and this talk about 1 million. मगर ये है कि I don't stop that. But my point is, I don't think everything is lost. This country will continue, and but it will have to go through the difficult times. Zunaira, it won't happen unless there's political resolution. All right, that's the key word. That's the key word. Thank you so much once again, and we will keep bothering you whenever we are stuck. Anytime. Thank you so much. Thank you. Thanks.